Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well, putting your best possible efforts towards the civil services examination and specifically for the upcoming prelims examination which is scheduled at 26th of May 2024. Now this is a video session on daily news and editorial analysis dated 4th of November. In this video session, I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express, the important news that will help all the aspirant appearing in the civil services examination, state public service commission examination, and many other government examinations that will be appearing for. The entire session will help all the category of student who is watching. Now I'll start the session, and before starting, I'll give you the highlights of the news that I'm discussing for the day. For the day, the first important news is about the direct listing on the foreign exchange. Government has allowed making some changes in the Companies Act 2020. Now, the other details and the other news is about India and Sri Lanka that is working towards the debt treatment for Sri Lanka specifically, which has recently witnessed the worst economic crisis. The third important news is about India and Britain that I've discussed with the part of discussion was made on FTA, the ongoing crisis in Gaza और भी कुछ ऐसे important issues है उसके बारे में discussion की गई. The other important news talks about the service sector which has lost the data. अगर बात करें SPN global ranking की जिसे PMI rank actually बोलते हैं उसमें काफ़ी हद तक deteriorations देखी गई. We'll see the detail what are the reason and we'll conclude the session the discussion with today's editorial, that is IIT are over committed in crisis, something very important that will give you a deep insight why the IIT performance and the role of IIT become very significant for a country like India. So these are all the news and editorial that I'll be discussing in detail with you. Let's get started one by one. The first important news is about the direct listing of the domestic companies on foreign exchange. You can find this news on Indian Express explain page. So why we are discussing this news? Because recently the government of India has actually permitted certain Indian company to directly list on the foreign stock exchange. जो foreign stock exchange है उनमें direct वो list कर पाएंगे. This will allow the company to have a global capital. The company will have a global capital and boost their capital outflow as well. So these are the main rationale with which the government has come up with the decision. इसके और क्या क्या benefits होंगे, क्या significance होंगे, specifically for the Indian company. I mean we are more focused on the Indian company, indigenous companies पे इसके क्या significant advantage होंगे वो देखेंगे. So what is the government decision? First and foremost, in July 2023, the Ministry of Finance or the Finance Ministry has announced that the government has decided to enable the listed and unlisted domestic companies. Now, just to give you an idea, जो companies होंगे इंडिया की जो भी companies है, whether it is listed or unlisted, right? So both will be included for the part of equity share in the IFSC. अगर बात करें IFSC के, this is there in Ahmedabad, International Financial Service Center बनाए गए हैं. I think most of you must be aware of this IFSC. Now essentially इसका मतलब ये है कि जितने भी domestic companies हैं, they can be prescribed with the foreign stock exchange, including the gift city which is there in IFC Ahmedabad. तो ये कुछ basics हैं जो आपको जानना ज़रूरी है that how the things will actually work within India. Now, how do a company currently list on the foreign brochures? क्या ऐसे बेसिकली जो प्रोसीजर्स हैं किस तरह से कंपनी की लिस्टिंग की जाती है? तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अभी एट प्रेजेंट दो मेथड अपना सकती है फॉर टू गेट द पार्ट ऑफ कंपनी डिपॉजिट रिसीट्स. The first is ADR, that is the American Deposit Receipts, and other is the Global Deposit Receipts. ये दो ऐसे ओवर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी यूज की जा सकती है फॉर द डिपॉजिटरी रिसीट्स. I'll tell you the comparison between these two in a while. Now, the depository of these receipts represent the share of company and allow the international जो investors हैं उनको ट्रेड करने में मदद मिलती है without directly holding the company stock. तो जो भी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज दे आर इन्वेस्टिंग इन कंपनी ए, they don't need to directly buy the share, they can make an investment through this depository receipts. Now the Indian company seeking the foreign listing would have to transfer their share to the Indian custodian, which will then issue the depository receipt
टू द इन्वेस्टर. इट्स लाइक एफडी. जिस तरह से आप जितनी की एफडी बुक करेंगे आपको एक रिसीट दी जाएगी, एक प्रोमिसरी नोट इज ऑल्सो देयर, द कॉन्सेप्ट इज देयर. तो उस तरह से प्रोमिसरी नोट में बेसिकली डिस्काउंटिंग होती है. नाउ एफडी देयर इज नो डिस्काउंटिंग, यू गेट इंटरेस्ट. तो जस्ट टू गिव एन आइडिया किस तरह से काम करती है, उसके अकॉर्डिंगली एक कस्टोडियन जो है वो आपको एक्चुअली इशू करेंगे डिपॉजिट रसीद, जो कि आप ट्रेड कर पाएंगे एंड फर्दर ट्रेड प्रोसेस कैन कंटिन्यू. Now, the other important thing that you need to know in this context is about the comparison between the GDR and ADR. क्या है GDR and what is ADR? So, how it does work? अगर GDR की बात करें, this is the part which is there in the United States, and ADR basically European countries में की जाती है. How does it help? It help to acquire resources in United States. अगर आपको US में कोई companies acquire करनी है, उसके share लेने हैं, then you have to issue with the GDR. Now, ADR is actually for the global countries and even specifically for the European countries. Objective क्या है? Objective is to invest in the foreign company. जो investment है, that is the sole criteria, and here the investment is made no, apart from America, apart from US, और सारे companies में investment mandatory. Restrictions is there in the United States, there is other countries. List of stock is specifically only in United States because this is the part which is there, and other countries, and owners is less, and it is so global. फर्स्ट नीम ध्यान रखें, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहीं भी की जाती है, और एडीआर जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में की जाती है. दैट इज वाई इट्स नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू. आप एक बार और कंपैरिजन देख लें सो दैट मेक मोर क्लियरिटी. कई बार यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स में सवाल भी पूछे हुए हैं डायरेक्टली एडीआर और जीडीआर पे कंपैरिजन को लेकर. नाउ क्या एडवांटेजेस होंगे डायरेक्ट फॉरेन लिस्टिंग के? I mean, how it will help the Indian companies. जो नई provisions actually government ने लाई है. This is like where the Companies Act 2020, where the provision was some changes were made to tap the foreign market and raise fund. It will offer better valuations and export trade in the foreign currency. Suppose an individual is trading within India और उसको एक foreign exposure मिलती है, तो उसकी value या फिर particular जो profit making है वो भी बढ़ेगी. It will make the benefit to the startup. इंडिया में खास करके अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें, इंडिया इज अ कंट्री दैट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेवलपिंग यूनिकॉर्न्स, तो उनको भी एक प्रॉफिट या दे विल बी ऑल्सो गेटिंग अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑन द फंडिंग. Now this will allow companies to have another medium raising capital for the fund, and it will also need to meet the government norms with some specific jurisdictions. So these will be some of the significant advantages of issuing the direct foreign listings. Now moving ahead with other news, India will collaborate with Sri Lanka on the debt treatment. We have known that Sri Lanka की अगर specifically बात करें, Sri Lanka is a country which has witnessed the huge debt crisis. Debt crisis काफ़ी ज़्यादा high रही है, and even the worst economic crisis that we have seen for Sri Lanka. Right, recent, it's not too long. Recently, the things has happened. Now, the thing that you need to know why India is actually helping out, because first and foremost we are the immediate neighbor. एक इमीडिएट नेबर होने के नाते इंडिया की ये ड्यूटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडिया शुड एक्चुअली हेल्प, राइट. तो डेट रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया हेल्प करेगी टू ओवरकम द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर निर्मला सीतारमन इज ऑन अ विजिट टू श्रीलंका. 3 डे विजिट पे हैं वो, और ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कशन में बात की गई. Now, what are the focus area that India and Sri Lanka will be looking for? The first is the cooperation on inter-grid connectivity, which will help both country, not only India but also Sri Lanka. India और श्रीलंका दोनों को इसमें मदद मिलेगी. उसके साथ साथ एविएशन सेक्टर पे काम करने की बात की गई है. The power project will definitely help between both countries. Oil explorations in the town of Mannar, और MOU साइन की गई with 15 million assistance to promote the Buddhist ties, right? So these are the part MOUs actually साइन की गई है, जहाँ पे दोनों countries will see. The India also have a substantial population of Buddhist, and श्रीलंका में तो है ही, तो इस तरह से इसके promotions में भी help मिलेगी. Nearly 10 million of this fund will support the solar electrifications of the religious site. And India, अगर बात करें इंडियन टूरिस्ट की, श्रीलंका दे आर द मैक्सिमम विजिटर, बीइंग द इमीडिएट नेबर, जो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन है. और अगर बात करें श्रीलंकन इकोनॉमी की, दैट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है श्रीलंका की इकोनॉमी. Now the second tranches of IMF will be given to Sri Lanka, but they're subject to certain criteria that is fulfilled. IMF ने कहा है
that the major creditor include the China, India, and Japan on board with the debt treatment plan to have agreement with all, or unlocking the second tranches of the International Monetary Fund extended with the part of extended fund facility जिसे EEFB कहते हैं. So IMF is an organization which is important for your exam, और extended fund facility के बारे में भी आप थोड़ा basic सीख लें. These two concepts or part will be relevant for the prelims examination. Now there's a NAM 200. Sri Lanka, President of Sri Lanka has thanked the government of India. Nearly 4 billion Indian assistance दी गई थी with the part of the painful crisis, economic crisis that Sri Lanka has actually witnessed. And Sri Lanka faced that it is unprecedented economic crisis last year, and India has a duty-bound stand with its neighbor India ने proactively. Now, these efforts are really need to be appreciated. India ने proactively help किया Sri Lanka को, and Sri Lanka president has also said that the virtual launch of the foundation of actually virtual launch की गई है 1,000 houses की that was built on the hilly area of Sri Lanka, and Indian granted with the assistance to that. So this was also the inaugurations that took place recently. Now moving ahead, Britain and India to discuss the Gaza and FTA progress between both countries, and specifically Gaza और Israel की अगर बात करें, this is highlighting humanitarian crisis जो Israel और Gaza के war के बीच में arise हुई है, that is concerning for India as well. So Prime Minister of India has spoken to British Prime Minister over the telephonic call, and he has said that they need to have a de-escalation in the tension which is ongoing in the Israel and Gaza conflict, and importance for protecting the part of innocent civilian. आपने देखा होगा कई ऐसे डेथ रिपोर्ट किए गए एवरी डे वी आर रिपोर्टिंग 170 to 300 डेथ, राइट. हर एक दिन बमिंग की वजह से नो द मिसाइल अटैक व्हिच इज टेकिंग प्लेस, a lot more civilian life, they are not the one who is responsible. हमास और इजराइल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये लड़ाई है, तो ये लड़ाई उनको लड़नी है, नॉट द सिविलियन. दे आर लूजिंग देयर लाइफ फॉर एनी वॉर, आई मीन फॉर एनी कंट्री, बिट फॉर एनी कंट्री जहाँ भी वार हुई है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनके सिविलियन को ही हुई है. Now, strengthening the bilateral ties between India and UK. This was specifically with the context. India ने UK के साथ bilateral relationship बढ़ाने की बात की. They have also reiterated their commitment to continue strengthen the bilateral comprehensive strategic partnership, including the area. The area include trade. Trade is the one area. Then we have investment, right? Investment is the other area. Then emerging technology, defense, security, and healthcare are the sectors. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया और यूके अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे. Now, deep concern, the Prime Minister of India actually has said that the Britain expressed a deep concern over terrorism. Terrorism is something which UK has been witnessing quite some time. Worsening situation हो रही है worst में, I mean world level पे, चाहे वो आप बात करें रशिया या यूक्रेन की. Russia, Ukraine has also witnessed this, and even Israel and Gaza and Palestine, which is region, they are disturbed, right? तो इस तरह से टेररिज्म को हमें रोकने की जरूरत है. They agreed to end the regional peace, security, and stability with continued humanitarian assistance. Now moving ahead, Service PMI fall to 7-month low. सर्विस सेक्टर की जो एक्चुअल में रैंकिंग की जाती है, जो इंडेक्स निकाले जाते हैं, उसे PMI इंडेक्स कहते हैं, राइट. दिस इज परचेजर मैनेजर इंडेक्स, and this is published by SP and Global Survey. So this name is important, SP and Global Survey. तो आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए, कई बार एग्जाम्स में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. इवन फॉर मेनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देयर कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट. तो ये फॉल की गई है, इसमें पहले ये 61 पे थी, नाउ इट हैज फॉलन टू 58.4. Now findings क्या है? The new business grew last week in the May, where certain types of service sector were subdued in their ranking. और जो demand है, the demand was actually not that high as required. Now the new jobs were created in the month of October, but the slowest pace were there in the last 3 months. पिछले 3 महीनों में सबसे कम रिपोर्ट की गई है. The international orders saw the fastest upturn since the PMI index in September 2014. और नई orders की अगर बात करें from country like यूरोप से, इवन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स और अदर एशियन कंट्रीज से एक्चुअल में रिपोर्ट्स की गई हैं दैट द ऑर्डर्स वर देयर, बट दे वर नॉट सब्सटेंशियली हाई एज डिजायर्ड एज रिक्वायर्ड. The survey find out that 400 companies that is there on the non-retail consumer services and transport, information, communication services are not doing the full-fledged business जिस तरह से actually demand होनी चाहिए थी या जो actually anticipations थी.
Now, these are the data that will help you to understand the part of graph which is there. So this was for the month of January 2022. Then suddenly 50, 2023 के लिए और अक्टूबर में this is where the downfall is, right? So you can see this number is going down and it is 58.4 at the part of the ranking which is there. Total percentage में calculated the service PM. Now, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है द इन्फ्लेशनरी प्रोसेस inflationary forces which is there. The service sector has intensified the primary result because of the surging food, fuel and the staff cost. तो ये कुछ तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटैंशली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रैंकिंग इस नंबर्स को गिराने में. The rise of the charges that could be triggered with the part of declaration in the sales growth. So see, there's a target when it comes to the part of market. The sales and growth is something that is prerequisite. तो यहाँ पे भी growth उतनी ज़्यादा report नहीं की गई in terms of sales. Now moving ahead with the editorial for the day, that is the IITs are overcommitted in the crisis. This editorial or article will give you an insight कि किस तरह से IIT की एक important role है और प्रेजेंट में क्या करने की ज़रूरत है. IIT ने अपने ओवरसीज कैंपस बनाने की भी बात की है. Will they be that effective? We'll see that indeed. So first we'll see the foreign adventures that is coming up, over expansion at home, new IITs, faculty change और challenges क्या क्या हैं, future prospect क्या है, and even the conclusion part. So if you look at the data, Indian Institute of Technology are highly regarded as the global representation and pinnacle for the higher education in the country. इंडिया के जो higher education है उसमें IIT का काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है. IIT has been transforming India's tech mind and overall development, incorporating the part of technology. Now they have produced high tech, in terms of जितने भी IITs हैं उन्होंने नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाद भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट को दिया है. दिस इज क्रिटिकल एविडेंट विद द फैक्ट कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की आप देखिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनीज टेक जाइंट्स हैं जिनके सीईओ जो एक्चुअल में इंडियन है, राइट. सो दिस इज एविडेंशियल ऑफ द फैक्ट दैट हाउ आईआईटी हैज एक्चुअली कम अप, चाहे वो गूगल की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें. Despite the prestige gaining with the IITs, there is an incredible change which is witnessed. और बहुत सारी चेंजेस ये लेकर के भी है कि आईआईटी में अभी भी एडमिशन पाना उतना आसान नहीं है. इट्स प्रीटी टफ. देयर वेरी लेस नंबर ऑफ सीट विच इज देयर फॉर द एस्पिरेंट्स. हाउएवर IIT face significant challenges when it comes to the expansion of its campuses. कैंपस की बेसिकली बात करें ओवरसीज कैंपस की, इट्स नॉट दैट इजी फॉर द एक्सपेंशंस, राइट. द करेंट सिचुएशंस रिवील द इम्प्लीमेंटेशंस इन द क्राइसिस. Now foreign advents या foreign campuses की बात करें, IIT मद्रास स्पेसिफिकली गिव यू एन एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जिंजिबर में एक नई कैंपस बनाने की बात की है एंड दिस विल बी ऑल्सो देयर विद IIT दिल्ली दैट इज कमिंग टू लॉन्च अ न्यू कैंपस इन अबू धाबी. ये दो IITs हैं जो कि कैंपसेस बनाएंगी बट ओनली स्मॉल बैच, बहुत ही कम 70 बैचेस के स्टूडेंट होंगे एंड द एडमिशन विल बी नॉट एज क्लियर. जो इंडिया में जिस तरह से एग्जाम्स होती है जेई की उस तरह से एग्जाम नहीं होगी. देयर विल बी डिफरेंट एग्जाम विच विल बी नोन एज IIT ZST, that is Zanzibar Selection Test. After it will be followed with the interview, then you can only take the admissions in these campuses. Now इसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो और भी बच्चों के लिए खोले गए हैं, लाइक द कंट्री Zanzibar is in Tanzania, और जो दूसरे जगह के लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे दैट इंक्लूड इथियोपिया, नाइजर, केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ के इंडियन डायस्पोरा की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा भी देखी गई है. Now, over expansions at the home, if you look at the IIT, the inceptions of IIT took place in 1950, just immediately after independence. Or IIT Kharagpur was the one institute that took place, that was formed in West Bengal, right? The most IIT partner with the top universities. उन्होंने सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी के साथ कोलैबोरेट की. IIT खड़गपुर की मैं बात कर रहा हूँ. इनके अलग अलग वर्टिकल्स ने कोलैबोरेट की और एक प्रॉपर IIT इस्टेब्लिश की. They hired the trained and best universities, अच्छे यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशंस हुई एंड दे हैव ईगर टू कंट्रीब्यूट इन द नेशनल डेवलपमेंट. नाउ एट प्रेजेंट जितने भी IITs हैं बहुत ही छोटे इंस्टीट्यूशंस लेवल पे अगर बात करें, देयर ओनली 20,000 दैट इज ओरिजिनल विद द 6 IITs. जो पुराने IITs हैं उसमें स्टूडेंट्स का नंबर कम एंड इवन द टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट इज ओनली 20,000. वी डेफिनेटली नीड टू इंक्रीज द सीट्स and enrollment in the IIT so that maximum student can avail the facility.
Now, new IITs जो बने हैं, I mean, since 2015 government has expanded IIT के जो दायरे हैं उसको बढ़ाया गया 2015 के बाद, और good number of IITs were there. But these IIT face challenges in maintaining their rigorous stand in their original institutions. Some of them has framed with the upgrading existing institutional challenges. अगर बात करें कुछ आईआईटी की, लाइक आईआईटी धनबाद की अगर बात करें, जो कि एक्चुअली में पहले आईएसएम थी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उससे फिर आईआईटी बनाया गया. देन द सेम आईआईटी बीएचयू, राइट, विच वाज एक्चुअली नॉट फुल फ्लेज्ड आईआईटी, दैट वाज ओनली आईआईटी डिपार्टमेंट दैट वाज फंक्शनिंग. उसके बाद इसे आईआईटी विद ओवर एक्सीलेंस एंड परफॉर्मेंस इट हैज बीन अपग्रेडेड टू द आईआईटी बीएचयू, राइट. पहले इट वाज नोन एज आईआईटी बीएचयू. Now, these IIT, 23 IITs at present, which is functioning, they have expanded more than 1,20,000 within the part of the student. और indicators ये हैं कि और ज़्यादा access of opportunity देने की ज़रूरत है students को भी, और उसके साथ साथ जो faculties हैं उनको भी और level पे explore करने की ज़रूरत है, so that they can also put their best effort toward the part of the curriculum which is there. Now, faculty challenges and future prospects की अगर बात करें, faculty किसी भी institutions की hurt होती है, and the faculty and professor are the one that decide how the institutions grow. किस तरह के बच्चे हैं and how they will be actually shaped. तो brightest mind को shape करने की जो जिम्मेवारी है वो professors की होती है, but इंडिया में जो problems हैं, जो salaries हैं, that is not as per the international standard. So salary is a big chunk. See, for any organization that you're working, आई मीन मॉनेटरी बेनिफिट्स वर्क एज अ री इन्फोर्समेंट. वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है आपके वर्क को और डेडिकेटली करने के लिए. सो दैट इज द पॉइंट दैट शुड बी हाईलाइटेड. एंड फॉरेन ट्रेन्ड इंडियन आर जनरली रिलक्टेंट टू रिटर्न टू द अनकम्पिटिटिव environment. Work environment be it's not that proper, or it's like India is facing more administrative bureaucracy, which is finally there. The top India talent is increased with the part of IT or emerging biotech related biotech within India and abroad is something that is there. So these are some of the challenges that we need to work upon. Now, to conclude the fact, ensuring a high quality faculty in IITs is something that is required. एक IIT के लिए जो proper vision है, Ministry of Education also need to ensure that they are working in the right directions. उनके goals, उनके challenges क्या क्या हैं, उसके साथ मिलके काम करने की जरूरत है, vision set करने की जरूरत है. Expanding the IIT system domestically might not have the wise decision. Expanding the overseas branches at present face challenges. अगर इंडिया में सीट्स बढ़ा करके या कुछ और कैंपस बनाने में टाइम लगती है, एनी कैंपस दैट हैज टू बिकम इट विल टेक मिनिमम 5 years, राइट. 2 to 5 years तो लगने ही है. आई मीन नटशेल अगर आप बात करें तो 3 years तो मिनिमम दैट इज विल टेक. तो क्या बाहर कैंपस बनाना भी आसान है? बिल्कुल नहीं. दैट इज ऑल्सो टेकिंग अ गुड नंबर ऑफ अदर लेजिस्लेटिव प्रोसेस. बहुत सारे ऐसे ड्यू प्रोसेस है जो करने होते हैं. And even the challenges is that whether student will be accommodating, क्या उतने financially वो fit हो पाएंगे कि वहाँ पे admission लें. Developing quality education in new IT is a major challenge, and failing addressing the issues could harm the prestige of the entire IIT in the longer run. तो rectification की ज़रूरत है policy makers के साथ, stakeholders के साथ, and even जितने IIT के directors उनके साथ meeting करके government को इस पे काम करने की ज़रूरत है. Now this is an opinion based question where एक opinion based सवाल भी आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि किस तरह से आईआईटी के फंक्शनिंग को और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है. मूविंग अहेड विद द आंसर डिस्कशन फॉर द डे. जो कल के सवाल हैं उसके ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस और आंसर्स के डिस्कशंस. फॉर फर्स्ट द करेक्ट ऑप्शन इज बी. मैंने आपसे एनसीएलटी के बारे में पूछा था, इसके करेक्ट ऑप्शन 1 है दैट सेक्शन 4110 ऑफ द कंपनीज एक्ट हेयर टू अपील विद द पार्ट ऑफ कंपनीज law tribunal, NCLT जिसे कहते हैं. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द कॉम्पिटेंस एक्सपीरियंसेस के थ्रू पे वो अपॉइंट करते हैं. सेकंड वाज अबाउट द सिम स्वैप. इसके फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, दैट इज द फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. आज के एमसीक्यूज के सवाल. टुडेज एमसीक्यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द propane. It's an odorless, colorless and gaseous hydrogen. It is related to the crude oil and fractional distillation. The octane is really low. तो आपको क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं 1 के साथ, ए या फिर बी, सी और डी, एंड यू हैव टू मार्क योर करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. Second question of the day is about the Dagestan. It's a part of Russia Federation and it's border with the Black Sea. को बताना है मैप. डू चेक आउट मैप फॉर दिस इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन. मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके साथ क्वेश्चन नंबर के बाद आप अपने ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमें.
And whomsoever will be writing the answers in the comment section, I'll highlight that comment in the next discussion for the day. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern about test series, admissions, programs, or any other queries about the courses, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Be motivated, prepare best, and make the success happen to your footstep. Thank you so much.